Hello everyone, myself Soumendra Sharma और today's topic is polynomial. First of all, we discuss algebra. Now we discuss the algebra. Algebra is the branch of mathematics where we study the relation between variables and constant. Means algebra क्या है कि algebra branch of mathematics, यानी ये एक mathematics की क्या है ब्रांच है जिसमें हम where we study, जिसमें हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं relation between the variables and constant. variables और constant के बारे में हम क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं. अब variables और constant क्या है इसके बारे में आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. अब नेक्स्ट है, उससे पहले एक चीज और है, algebra and algebraic expansion. इन दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है. Algebra is the branch. First of all, I am repeating. Algebra is the branch of mathematics. Algebra is branch of mathematics where we study the relation between variables and constant. But algebraic expansion, the relation between variables and constant is called algebraic expansion. यहाँ पर algebra में तो ये मैथ्स की ब्रांच है जिसके बारे में हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं. बट जो मेन रिलेशन होता है वो होता है algebraic expansion. For example, x plus 2, x plus 7, x plus 5, x square plus 3x plus 6 etc. We in algebraic expansions, in algebraic expansion the relation between variables and constant. इसमें हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हमने क्या की थी बात. तो सबसे पहली बात आती है वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. व्हाट इज द वेरिएबल्स एंड व्हाट इज द कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द वेरिएबल्स. हम सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो वेरिएबल्स इज द अननोन वैल्यू इन अलजेब्रिक एक्सपेंशन. यानी कि जो वेरिएबल्स होती है वो अलजेब्रिक एक्सपेंशंस में क्या होती है, अननोन वैल्यू होती है. ठीक है, यानी जिस वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है. जिस वैल्यू को हमको फाइंड करना है वो वैल्यू कौन सी होती है, वेरिएबल्स होती है. और इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंग्लिश लेटर्स. और इसे हम इंग्लिश लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल x y a b c d and etc etc. यस, नेक्स्ट है वेरिएबल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट के बारे में. तो कांस्टेंट क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यूज या द फिक्स्ड वैल्यूज इन अलजेब्रिक एक्सपेंशंस इज कॉल्ड कांस्टेंट. यानी जो अलजेब्रिक एक्सपेंशंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है और जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल x plus 7. Here 7 is constant. 7 is constant and x is variables. X is variables. Another example is x square plus 3x square plus 7. So 7 is constant. 7 is constant and x square plus 3x plus 7. Here 7 is constant and x is variables. Clear? And 3 are also constant. Clear? 3 are also constant because that's numerical value. Any problem? Next. Yes. Now our main topic is polynomial. सबसे पहले हमने अलजेब्रा पढ़ी थी. अलजेब्रा नेक्स्ट हमने अलजेब्रिक एक्सपेंशन, देन आफ्टर वी स्टडी द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. बट नाउ वी स्टडी द मेन टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स. तो पॉलिनोमियल्स इज इन अलजेब्रिक एक्सपेंशन द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव पावर्स. तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन में जो वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव. यानी उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. वो सारे के सारे जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन है वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल x plus 7 is polynomial. Because the value of x, the power of x
is positive. The power of x positive. But next example, x square plus 3x plus 7 upon x is not polynomials because in denominator form x, because in x is in plus 5x upon x plus 7 upon x. Here x is cancelled to x square, x is cancelled to x, but here x is not cancelled. Clear? So the power of x is comes to in negative. The power of x, so the power of x comes to in negative. So that's algebraic expansion is, so that is called the algebraic expansion, not is polynomial. It is called the algebraic expansion, but it is not called the polynomials because the variable's power comes to negative terms. Clear? Yes. Yes, we discuss the polynomials. Types of polynomials. There are two types. First, term based polynomial. Second is power base, power base या degree base, degree base polynomial. First is term base polynomial. नाम से पता चल रहा है टर्म बेस, यानी कि इसमें के टर्म पर बेस चलेंगे, यानी इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स का है, वन टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म्स. क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल्स. मोनोमियल्स नाम से पता चल रहा है मोनोमियल्स. विच पॉलिनोमियल? देयर are only one term in polynomial. There are only one term in polynomial. For example, x, y, z, etc. For one, there are only for one polynomials. यहाँ सिर्फ एक ही टर्म्स हैं, यानी कि यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन इनका कोई सिंबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? ओनली वन टर्म. इफ यहाँ पर यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो टर्म्स क्या हो जाती? गेन हो जाती. सो नेक्स्ट, सेकेंड इज बाइनोमियल्स. Binomials. Yes, there are two terms in this polynomial. Binomials, there are two terms in this, in this polynomial. For example, x plus 2, one term and second terms. Next, x plus y, one term and second term. Clear है? 2x plus 5, here one terms and second terms. Clear है? Yes.
Next is trinomial. Trinomials. In this polynomial, have three terms. In this polynomials have three terms. For example, नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल्स यानी कितने टर्म्स होंगे, थ्री टर्म्स होंगे. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस टू, 1 2 एंड थ्री टर्म्स. क्लियर है. नेक्स्ट टर्म x प्लस वाई प्लस z, हियर 1 2 एंड थ्री टर्म्स. नेक्स्ट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. क्लियर है. दैट्स ट्राइनोमियल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज, ये तो ये अपने जो टर्म्स बेस. क्लियर है. मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे तक ये चलते रहते हैं. क्लियर है. यानी कि इसके अंदर एक एक टर्म्स इंक्रीज होती जाएगी तो इनके नाम में भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. क्लियर. ये तो इसलिए हमारे सारे टर्म बेस. क्लियर है. अब नेक्स्ट इज पावर बेस पॉलिनोमियल या डिग्री बेस पॉलिनोमियल. नाम से पता चल रहा है पावर बेस, यानी इसमें पावर पर बेस क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो. पावर बेस या डिग्री बेस यानी जिसकी पावर कितनी, वेरिएबल्स की पावर कितनी है. इट इज डिपेंडेड ऑन द वेरिएबल्स पावर. इट इज डिपेंडेड ऑन द पावर, वेरिएबल्स पावर. तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. Clear है. In this polynomial the variables power या variables degree are 1. In this polynomial the variables power are 1 या variables power are 1 या variables degree are 1. In this polynomial have, in this polynomial variables power या degree are 1. In this polynomials the variables power या डिग्री आर 1. यानी जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है या जो उसकी डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल x plus 7 is example of the linear polynomials because the variables power are 1. वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज 2x plus 5 here the variables power या डिग्री are 1. the variables power या डिग्री are 1. clear है. so we can say that the form of standard form of linear polynomial. Standard form of linear polynomial is ax plus b. Clear है. Here a and b are the constant where a comma b are constant and x is variables. Clear है. yes. Now we discuss the quadratic polynomials. First of all we discuss the linear polynomials. Which polynomials is called the linear polynomials whose degree is 1. clear. And next quadratic polynomials.
A polynomial whose degree is 2 is called quadratic polynomial. यानी जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री यानी पावर, डिग्री मीन्स इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए. क्लियर है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. क्लियर है. हियर the variables power of x, the variables क्या है इसमें, x है और उसकी पावर है 2. the variables power are 2. so its example is called the quadratic polynomials. clear है, या its algebraic expansion is called with the quadratic polynomials. next is 5x square plus 6x plus 9 is also quadratic polynomials, clear है. so we can say that the standard form of the quadratic polynomial according to examples is ax square plus bx plus c. Here the value of a does not equal to 0. यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए, because that is 2 degree polynomials. Clear. और here x is 2 degree and their coefficient is a. if the value of a are 0, so that is not become the quadratic polynomials. clear है, यानी कि a की वैल्यू यदि इसमें 0 नहीं होगी, a की वैल्यू इसमें यदि 0 हो गई तो ये क्या नहीं होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगी. क्लियर है. अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेम से पता चल रहा है क्यूबिक माने जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3. A polynomial whose degree is 3 is called cubic polynomials. For example 3x cube plus 2x square plus 5. ये example 5x cube plus 6. clear है. and its standard form is ax cube plus bx square plus cx plus t, where a does not equal to 0. सेम इज देयर. a की वैल्यू यहाँ पर यदि 0 हो गई थी, ये क्या नहीं होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगी. यस.